Welcome back everyone to lecture 7 of rational numbers. If you recall, in the last lecture we covered about number line, how to represent numbers on number line, correct? Now in this lecture, let's see what we'll cover. We'll cover this topic: insert rational number between two given rational numbers. Now, the topic might look a bit complicated, but it's actually easy. Let's take an example. There will be three different kinds of examples or methods that we'll cover. Let's talk about the first one. For instance, if I have a number like 2 and 3, so I would say these are two given rational numbers, and as per the topic, I have to insert one rational number between these two rational numbers. Let's see how do we do that. It's pretty simple. The method is, I'll take the first one, 2, and the last one, 3, add them and upon 2. So 2 plus 3 upon 2. That comes to be 5 upon 2. That's it. This is also a rational number if you recall. So if this is a rational number, I'll put this in between 2 and 3, that becomes my answer. So my answer is 2, 5 by 2, 3. That's it. I'm done. Now, just one thing. Actually, if you observe, 5 by 2 is what? It is 2.5. So can I say 2.5 comes between 2 and 3? Correct? So that means whatever we are doing, it's obviously correct. Got it? Now, so this was one kind of example. Let's talk about second kind of example, where if I've been given a fraction, for example, the fraction is something like this: 1 upon 2 and 2 upon 1. So I need to insert rational number between these two rational numbers. Small difference in the method. First one, what I'll do is 1 upon 2 as it is. The numerators of the given rational numbers 1 and 2 will be added, and denominators also added. As simple as that. So that becomes 1 plus 2, which is 3, upon 2 plus 1, which is 3. So that means the answer here is 1. So that means if I write the final step, it will become 1 upon 2, 1, 2 upon 1. That is 2. So this is my answer. So can I say it's again correct? If you observe, half and 2 ke beech mein, can I say 1 aata hai? Yes. So that's correct again. So in other words, if I have normal numbers, this plus this upon 2. If I have fraction, add numerator आपस में, denominator आपस में. That becomes a number between your given rational numbers. Right? Now, before writing the third kind of example, I want to take first wala. That is, for example, I have normal numbers 7 and whatever 9. You'll say, sir, write 8. I know, but I want to go by method. Okay. So what will you do in this case? You will say, if I have to insert rational number, you will say, sir, 7 plus 9 upon 2. That's perfect. Now what if I tell you I have to insert not just 1 but 2
rational numbers between 7 and 9. ठीक है? So let's see what is to be done. Same method. So first what you do is 7 plus 9 upon 2. Perfect. So इसको solve किया तो कितना आएगा? 7 plus 9 is obviously 16 upon 2. That is nothing else but 8. So answer comes to be 7, 8, 9. But now I have to insert two rational numbers. तो एक तो आ गया ना इसी मेथड से, दूसरा भी इसी मेथड से आएगा. मतलब now you consider this and this as your question. इसको एक सेकंड के लिए इग्नोर करो. So now can you again follow the same steps? So that becomes 7 plus 8 upon 2. So first number is 7. This will be my second number. Then 8. Then 9. Getting it? So 7 as it is. 7 plus 8 is how much? 15 upon 2, comma 8, comma 9. So can I say I have inserted 2, 1, 2. Two rational numbers between 7 and 9. अच्छा अगर 3 insert करना रहा तो no problem. Now consider 7 and 15 by 2 as your question. या फिर consider 15 by 2 and 8 as your question. वो भी चलेगा. Or if you want 8 and 9 you consider as your question. वो भी चलेगा. For example 7, 15 by 2 as it is. Now I'll consider this as my question. तो इनके बीच में insert करना रहा तो क्या करूंगा? 8 as it is. The next number becomes 8 plus 9 upon 2 and then 9. So 7, 15 by 2, 8, 8 plus 9 is 17 by 2, 9. That becomes my final answer. So how many numbers did I insert? I inserted 1, 2, 3 rational numbers between 7 and 9. That was my question. Understandable? Everyone? Now for the last category of question. Third. उससे पहले let's revise the previous two. We are learning this topic. Insert rational numbers between two given rational numbers. These are given rational numbers. तो क्या करना पड़ेगा? This plus this upon 2. This comes between the given. Second category. Fractions के बीच में अगर insert करना है, no problem. Numerator आपस में ऐड करो, denominator आपस में ऐड करो. उसका आंसर जो आएगा that comes between the given. Next category. We will learn now. बट उससे पहले अगर फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है और 2 या 3 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करना है, इन दैट केस व्हाट डू वी डू? एज इट इज 7 plus 9 upon 2, आंसर आया 8. सो 7, 8, 9. अब इन्हीं के बीच में इंसर्ट कर दो और एक. सो दिस प्लस दिस अपॉन 2. बाकी नंबर्स एज इट इज. और एक इंसर्ट करना है तो सेम मेथड कंटिन्यू करो. एंड यू डन. थर्ड कैटेगरी. व्हाट इफ I have to insert 3 by 5 and 2 by 3. ये given rational numbers के बीच में I have to insert not 1, not 2, not 3, 5 rational numbers. So when you have been given fractions and उन fractions के बीच में large number of rational numbers insert करना है, एक या दो नहीं, एक होता तो आपको मेथड पता है, this plus this upon this plus this. दो भी होता तो भी मैं सेम करता ना, फिर क्वेश्चन इन दोनों को कंसिडर करता एंड सेम this plus this upon this plus this तो भी चल जाता. बट I have to insert large number of rational numbers, any 5 for example.
6 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करना है, 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करना है, अगर इतना ज्यादा इंसर्ट करना है वो भी फ्रैक्शंस के बीच में, तो क्या मेथड यूज करना है? ऑब्जर्व। आई एम नॉट सेइंग कि आपका पहले वाला मेथड वर्क नहीं करेगा, जैसे कि 3+2/5+3 एक नंबर आ गया बीच में, फिर उसको और इसको क्वेश्चन कंसिडर करो जैसे यहां पे किया था, वो भी चलेगा, ऐसे करते जाओगे वो भी चलेगा, बट इट्स बेटर दैट यू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट मेथड, इट मेक्स योर जॉब इजी। सो लेट्स सी, इस मेथड के लिए देयर आर स्टेप्स। स्टेप 1, मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो दिस इज माई स्टेप 1। तो मैं स्टेप 1 के हिसाब से अगर करूं तो क्या होगा, 5 and 3 जो डिनोमिनेटर्स है, इफ आई मेक देम सेम तो क्या हो जाएगा? एलसीएम इज व्हाट? 5 and 3 का। टेल मी, कैन आई से यस इट इज 15? अच्छा, इफ इट इज 15 तो 5 को 15 कैसे बनाओगे? इंटू 3, तो इधर भी हो जाएगा इंटू 3, सो दैट बिकम्स 3 3s are 9 अपॉन 5 3s are 15। अच्छा, 3 को 15 कैसे बनाओगे? 3 5s are, यानी इंटू 5, तो इधर भी इंटू 5, 2 5s are 10। एनी डाउट्स टिल नाउ? आई होप नो। नाउ observe what we have got, 9 by 15 and 10 by 15, correct? Now please try and understand, अगर 9 by 15 10 by 15 के बदले if I would have got 9 by 15 and 17 by 15, just an example, अगर ऐसा कुछ मिला होता तो पहली बात तो मैंने इस नंबर का एलसीएम लिया, आई गॉट दिस, इस नंबर का एलसीएम लिया, आई गॉट दिस। मान लो ये मिलने के बजाय आई वुड हैव गॉट 9 by 15 एंड 17 by 15। तो अब अगर इन नंबर्स के बीच में यू वांट 5 रैशनल नंबर्स, तो इट्स सिंपल, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इसका मतलब आई कैन राइट द नेक्स्ट नंबर एज 10 by 15, फिर 11 by 15, 12 by 15, 13 by 15 एंड सो ऑन, कहां तक? 16 by 15 तक, क्योंकि 9 and 17 के बीच में जो भी आएगा आई कैन राइट ऑल ऑफ देम इफ आई वांट। यस और नो? सो इन अदर वर्ड्स, अगर ये 17 by 15 आया होता तो माई जॉब वुड हैव बीन वेरी इजी, सिंपली ऐसा लिख देता मैं एंड आई एम डन विद द आंसर, करेक्ट? बट क्या फिलहाल केस ऐसा है? नोप। सो क्योंकि केस ऐसा नहीं है, वी हैव टू गो फॉर वन मोर स्टेप, स्टेप 2। ये जो 9 by 15 10 by 15 आया है, उसके साथ यू हैव टू मल्टीप्लाई। अगर क्वेश्चन ने बोला है यू वांट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम, तो यू मल्टीप्लाई दिस एंड दिस बाय 6, मतलब 9 by 15 इंटू 6 इंटू 6, 10 by 15 का भी दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाय 6। अच्छा, अगर क्वेश्चन ने बोला होता दैट यू वांट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम, तो यहां पे आप 6 नहीं 7 से मल्टीप्लाई करते, यानी +1। अगर क्वेश्चन बोलता है ही वांट्स 7 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन, तो आप यहां पे क्या मल्टीप्लाई करोगे? 7। यहां पे भी क्या मल्टीप्लाई करोगे? सॉरी, इफ ही वांट्स 6 तो आई मल्टीप्लाई बाय 7, इफ ही वांट्स 7 आई मल्टीप्लाई बाय 8 एंड सो ऑन। तो फिलहाल उसको चाहिए 5 रैशनल नंबर्स, दैट मीन्स आई मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, going further. So when I do this, let's see what do we get. Now 9 into 6 is how much? Obviously 54 upon 15 6 is how much? 90. Then 10 6 are 60
Then 15 6 again 90. अब देखो ना, now 54 और 60 के बीच में I can simply write the next numbers easily. That is 54 upon 90, 55 upon 90, 56 upon 90, 57 upon 90, 58 upon 90, 59 upon 90, and then the last one, this is given 60 upon 90. So between this and this कितना numbers put किया? 1 2 3 4 5. क्या क्वेश्चन ने 5 बोला था? हाँ, बट सर क्वेश्चन ने तो इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस बोला था, आप तो इनके बीच में इंसर्ट कर रहे हो. यस माय डियर, बट ऑब्जर्व वन थिंग केयरफुली, that this number and this number is nothing else but this number and this number. मतलब ये नंबर्स कोई अलग नंबर्स नहीं है. सिमिलरली ये नंबर्स कोई अलग नंबर्स नहीं है. क्यों? चलो टेबल्स अप्लाई करते हैं. यहाँ पे टेबल्स अप्लाई हो रहा है ना, तो कट कर सकते हैं ना. तो 0 0 इज गॉन. नाउ कैन आई अप्लाई 3 का टेबल? 3 2s 3 3s. सो आंसर कितना आया? 2/3. ये नंबर क्या है? 2/3. क्या गिवन नंबर भी 2/3 था? हाँ, तो इसका मतलब ये भी वैसा होगा. चाहिए तो टेबल्स अप्लाई करके देख लो. चलो लेट्स अप्लाई द टेबल्स. कैन आई अप्लाई 2 का टेबल टू मेक इट सिंपल? चलो 2 2s 4, 7s 14. Am I right? 2 4s 8. It becomes 10. So 5s 10. Next, can I apply 9 का table? So 9 3s 27. 9 5s 45. So it is 3 upon 5. So can I say ये भी तो 3 upon 5 था. इसका मतलब अगर मैंने इन नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट किया है, मतलब नथिंग एल्स बट इन नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट किया है. ऑलराइट, सो नाउ let's revise this last part, this last method, third kind of question, जहां पे उसको फ्रैक्शन के बीच में लार्ज नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स इंसर्ट करवाना है. जैसे कि 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करो, 6 इंसर्ट करो, 7 इंसर्ट करो. तो ऐसे केस में क्या करना है? स्टेप 1, मेक द डिनोमिनेटर सेम. सो डिनोमिनेटर कैसे सेम बनेगा? एलसीएम. सो 5 और 3 का कितना है? 15. तो इसको 15 बनाओ, इसको 15 बनाओ. 5 को कैसे बनाओगे? इंटू 3. सो ऊपर भी इंटू 3. सो बिकम्स 9 अपॉन 15. एंड सिमिलरली यहां पे अगर ये 9 अपॉन 15 और 10 अपॉन 15 के बजाय 9 अपॉन 15 और 17 अपॉन 15 आया होता, तो मैं डायरेक्टली पुट करता ना 10 अपॉन 15, 11 अपॉन 15, 12 अपॉन 15. आ गए ना 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन. बट ऐसा आया है क्या? नहीं, मेरे पास तो ये है. तो क्या करूं? तो स्टेप 2, अगर उसने बोला था 5 रैशनल नंबर्स चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय +1, दैट इज 6. 9 इंटू 6 15 इंटू 6, 10 इंटू 6 15 इंटू 6. अगर वो किया तो आंसर आता है ये 54 अपॉन 90, 60 अपॉन 90. बस. नाउ क्योंकि डिनोमिनेटर इजिली सेम है, तो आई विल सिंपली राइट 54 के बाद 55, 56, 57, 58, 59 अपॉन 90, एंड दैट्स इट. आई एम डन विद माय आंसर. Alright, now I hope you've understood this really well. So based on this, what you got to do is you got to solve exercise 1E completely. Okay? And yes, one last thing. I thought you might get a doubt on this kind of question. What if I tell you insert one rational number between something like this, 2 and 3.2. Is it a fraction that you see directly? No. Fraction नहीं है तो it is a simple method. First method, यानी कि step is 2 plus 3.2 upon 2. That's it. So answer is what? 2 plus 3.2 is how much? It is 5.2 upon 2, which is nothing else but 2 ones are 2 2s are. So that is 2 point. It becomes 12, 6. So 2.6. Correct?
Now I'm pretty sure you'll be able to solve that exercise. You need to solve it as homework. And we will stop the lecture here. See you again very soon. Thank you, everyone.